guys, welcome back to my YouTube channel net-exponent. So for today's discussion I have come up with a very interesting and a very important topic, and that is ADR, GDR and IDR, American Depository Receipts, Global Depository Receipts and Indian Depository Receipts. So this topic is very important, not just for UGC net candidates but for all the students out here like who are preparing for their CA, CS or are doing their MBA or BCom, BBA. So this topic is like very important, and I'm very sure and many of you would agree to me, like there are many students who just leave out this topic just because they don't understand it or they find it very difficult. So they just don't do it, right? They just don't want to do it for their exam and waste time on this. But I would like to tell you is this topic is like very important, and believe me, मैंने भी ये topic छोड़ दिया था. When I started this topic for the very first time, even I was like यार ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा. So in this video I have tried to keep this topic, I tried to make this topic in a very simple manner so that this video would be of great help to you. और अब आप in your coming exam make sure that you do this topic और अब आप छोड़ के मत जाना. Fine. So let's get started. ADR, GDR and IDR. What do you mean by this? इसका concept बहुत ज़रूरी है, इसका concept समझना. Plus how does this actually works? इसका mechanism क्या है? So I'll take a very simple example and I'll explain the whole working through this example. Suppose there is an Indian company, right? Now this Indian company wants to expand its business, and this company has already taken all the funds from the local, from Indian investors. Now this Indian company is in need of more funds, right? So this Indian company wants to take the funds from the foreign investors as well, right? ये Indian company अब चाहती है कि मुझे फंड्स मिले बाहर के इन्वेस्टर से भी, राइट? सो नाउ it looks easier, but yes, there are many complications involved in this. A foreign investor cannot just directly take the shares of Indian company and just directly invest in Indian company. No, the foreign investor cannot do so. There are many rules and regulations which need to be followed out. You cannot directly invest in, the foreign investors cannot directly invest in Indian companies. So now what is the actual procedure for this? What does Indian company has to actually do so that it can take the finance, it can allow the foreign investors to invest in this company, right? अगर ये Indian company India के investors में चाहती, then तो it was like very easy. Indian company shares issue करती और उसको funds मिल जाते. But now this Indian company wants to take the funds from foreign investors. Now what is the procedure for the same? We'll look into that. This Indian company, if it wants to take the funds from the foreign investors, then this Indian company would give its share to the domestic custodian bank. What is domestic custodian bank? Domestic इसलिए because this bank is situated in India, and custodian why? Because this bank will hold the shares of Indian company. This bank will take the shares as custody, right, of Indian company. So that's why it is called as domestic custodian bank. So now what Indian company will do? Indian company will give its shares, equity shares, to this domestic custodian bank, right? Suppose this Indian company gave 1 lakh shares to domestic custodian bank, right? Now what this domestic custodian bank will do? This domestic custodian bank will have some collaborations or agreement with the foreign bank, right? जो foreign में बैंक होगा ना, उसके साथ domestic custodian bank का collaboration और agreement हो गया. तो जो foreign में बैंक situated होते हैं, that bank is called overseas depository bank. Overseas means the bank which is located outside India in the foreign country. And why depository?
It is called depository bank because just like our banks deposit our money, in the same way overseas depository bank, in this bank the shares would be deposited of Indian companies, right? So now this domestic custodian bank will inform or will give the acknowledgement of the shares of Indian company to overseas depository bank. ये डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक इन्फॉर्म करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा किसको? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को कि भाई देखो मेरे पास इंडियन कंपनी के 1 लाख शेयर्स आ चुके हैं, राइट? अब सपोज ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक is located in USA. I am specifically taking the example of USA because ये जो इन्वेस्टर्स है ना ये यूएसए में लोकेटेड है, मतलब जो इंडियन कंपनी फंड्स रेज करना चाहती है वो यूएस के इन्वेस्टर से फंड रेज करना चाहती है, तो इसीलिए ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक कहाँ पर सिचुएटेड है? जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज सिचुएटेड इन यूएस, राइट? तो अब डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक ने इन्फॉर्म किया ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को कि मेरे पास 1 लाख शेयर्स है इस इंडियन कंपनी के. नाउ व्हाट दिस ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक विल डू? दिस ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक विल इन्फॉर्म ऑल द इन्वेस्टर्स विच आर लोकेटेड इन यूएस. ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो है वो इन्वेस्टर्स को बताएगी, ठीक है? So all the interested investors, what they'll do? They'll give the funds to overseas depository bank, and on the other hand, in return, overseas depository bank will issue, you can say a negotiable instrument, एक paper, right? उसे हम negotiable instrument बोलो या फिर you can say a certificate, a document which is called as depository receipts, DRs, depository receipts. तो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या करेंगे? ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक इन रिटर्न विल इशू डिपॉजिटरी रिसीट्स अ सर्टिफिकेट टू द इन्वेस्टर्स, राइट? और इन्वेस्टर ने क्या दिया? फंडिंग दी, फंड्स दिए, पैसे दिए ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को, ठीक है? अब वो पैसे किसके पास है फाइनली? अभी वो पैसे ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास है. हमारा मेन मोटिव क्या था? हमारा मेन मोटिव था कि इंडियन कंपनी को पैसे मिले, राइट? सो नाउ व्हाट दिस ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक विल डू? दिस ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, द फंड्स व्हिच आर बीइंग कलेक्टेड बाय द यूएस इन्वेस्टर्स, इट विल गिव दैट फंड्स टू द इंडियन कंपनी. अब इंडियन कंपनी को क्या मिल गए? फंड्स मिल गए जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था. फाइन, आई होप दिस कंसेप्ट इज लाइक वेरी क्लियर टू यू. मेक श्योर कि ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है, तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है? अब इंडियन कंपनी को फंड्स मिल गए, फाइन. नाउ ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये इन्वेस्टर्स के पास क्या है? डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं. अब ये इन्वेस्टर्स जो हैं, ये इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब इनका बाय और सेल कर सकते हैं डीआर्स का, डिपॉजिटरी रिसीट्स को वो बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. दैट मीन्स लाइक अब वो मतलब ट्रेड कैसे करेंगे? ये जो एडीआर है, मतलब जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है जो इन इन्वेस्टर्स को मिला, इनके पीछे जो अंडरलाइंग एसेट था वो क्या था? इनके पीछे जो मेन एसेट था वो क्या था? इंडियन कंपनी के शेयर्स थे, वही था ना? इंडियन कंपनी के शेयर्स के बदले में इनको क्या मिला? डिपॉजिटरी रिसीट्स मिले, यही था. ये इंडियन कंपनी के शेयर्स इसने यहाँ दिए, इसने यहाँ दिया, इसने इसके बदले में एडीआर दे दिया, ठीक है? तो इसके पीछे कौन है? इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं. तो नाउ इफ दिस इन्वेस्टर वांट्स टू डू ट्रेडिंग ऑफ एडीआर, तो वो क्या करेंगे? ये जो इंडियन कंपनी थी ना जिसके शेयर्स यहाँ दिए, अब इस इंडियन कंपनी के प्राइजेस विल फ्लक्चुएट, इट विल गो डाउन और इट विल इंक्रीज इन इंडिया. सो दैट फ्लक्चुएशन इन प्राइस इन इंडिया, इस कंपनी के जब प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, दैट वुड इफेक्ट द प्राइस ऑफ एडीआर, और उसके हिसाब से फिर ये इन्वेस्टर ट्रेडिंग करते हैं. सो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ एडीआर, राइट? अब ज़्यादातर होता क्या है, जिस थियोरेटिकली एग्जाम्पल ले रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही है. 1 ADR is equal to 10
इक्विटी शेयर्स, ज़्यादातर यही होता है कि एक एडीआर की वैल्यू इंडिया के 10 इक्विटी शेयर्स के बराबर होती है, विच मीन्स इंडियन कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू दिए डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को, तो उसके बदले जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो एडीआर जो रिसीट्स जो सर्टिफिकेट इशू करेगा ना इन्वेस्टर को, वो कितना होएगा 10,000 एडीआर. वाई? बिकॉज 1 एडीआर इज इक्वल टू 10 इक्विटी शेयर्स. तो उसके बदले 1 लाख इक्विटी शेयर के बदले ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक विल बी इशूइंग 10,000 ADRs to the US investors, right? So this was the concept of ADR. इसको ADR क्यों बोला जाता है? अब ADR stands for American Depository Receipts, which means when an Indian company wants to raise funds specifically from the investors of US, अमेरिका से जब वो funds raise करना चाहता है तो तब उनको ADR issue करना पड़ता है. That is why it is called American Depository Receipts. Now, in the same manner, if an Indian company wants to raise the funds from the investors which are located in foreign except America, अमेरिका के अलावा कोई भी और कंट्री, सपोज यूके, तो तब वो क्या, उसका नाम ADR से चेंज होकर उसे हम बोलते हैं GDR. GDR stands for Global Depository Receipts, right? The mechanism is exactly same. दोनों का mechanism बिल्कुल same work करता है, just like ADR. GDR भी वही same function करता है, but just the name ये अमेरिका के लिए है and that is for rest of the world. Fine. Now, what do you mean by IDR? What is this IDR? IDR stands for Indian Depository Receipts. अब ये Indian Depository Receipts क्या होता है? Just like ADR and GDR, Indian company, in ADR and GDR, Indian company wanted to raise funds from the investors located outside India, right? In the same manner, what is IDR? Now, there might be a possibility that the foreign company wants to raise the funds from Indian investors, right? Just uska opposite. It might be a possibility that the foreign company wants to raise its finance from the Indian investors. For that, it is called as IDR, Indian Depository Receipts. Mechanism will be बिल्कुल same, just like ADR and GDR. फर्क क्या होगा इसमें? बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो. अब फॉरेन कंपनी को क्या करना है? फॉरेन कंपनी को फंड्स चाहिए इंडियन इन्वेस्टर से. तो अब जो इंडिया में बैंक लोकेटेड होगा, वो इंडिया में जो बैंक लोकेटेड होगा वो फॉरेन कंपनी के लिए क्या होगा? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगा. ओवरसीज मतलब हमारी कंट्री से बाहर. तो फॉरेन के लिए ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक क्या होगा? जो इंडिया में बैंक लोकेटेड होगा. फाइन. तो प्रोसीजर इज एग्जैक्टली सेम. तीनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है. फर्क सिर्फ इतना है, ADR अमेरिका के लिए होता है, GDR इज फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट अमेरिका, एंड IDR इज if a foreign company wants to raise its fund from Indian investors, right? I hope that this video is very clear to you, because it's a very important topic and many of you find it like very difficult. So I've tried to keep it very simple. So I hope this video is of great help to you. So please do comment on the box below and give your feedbacks. Thank you so much.